इस वक्त वित्त मंत्री अरुण जेटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। Good evening. You can sit down and announce. Good evening. Consequent to the decision of the Government of India to deregulate diesel prices, we have decided to reduce the prices, and in Delhi the price is likely to go down by 3 rupees and 37 paise per litre from 3.37 effective tonight, midnight. This is including VAT? It is including tax, including VAT. So a detailed circular by the oil companies would be issued, and then you'll probably be able to calculate as to in which part of the country what the price of diesel today would be. The cabinet also decided to relaunch the direct benefit transfer in a more effective manner. The UPA government had only linked it to the Aadhaar platform. There were some legal issues, including court orders, which had prevented the effective implementation of the scheme. We had launched the Jan Dhan Yojana, and so far under the Jan Dhan Yojana, 6,02,000 accounts have been opened. I'm sorry, 6 crore and 2 lakh accounts have been opened. 6.02 crore. Our target has been 7 crores. And therefore, we have decided that in addition to the Aadhaar platform, all those who have a bank account would also get the LPG subsidy in their accounts directly. It will be transferred to their accounts. We hope by the time this scheme is implemented, a very large number of people that we were targeting have a bank account. There will be in a mission mode an implementation of the direct cash scheme, the direct benefit transfer, from 10th November 2014 to 1st January 2015. The quantum of subsidy will be decided by the government. Those who are still left outside the scheme, that is those who have neither an Aadhaar identity or a bank account, there will be very few of them. The old cylinder system would still be available for some time for them. This was the second major decision taken by the cabinet today. The third major decision was with regard to the pricing of the domestically produced gas. If you recollect, the original price per unit, the unit being MMBTU, was $4.2. The Rangarajan committee had followed a particular criteria and announced a price of $8.4 per MMBTU. This was to be implemented with effects from 1st April 2014. This implementation was halted by the Election Commission
so that the new government can take a view on the matter. यूपीए सरकार ने रंगराजन कमेटी के आधार पर $4.2 MMBTU की कीमत तय की थी। $4.2 को बढ़ाकर उसको $8.4 की कीमत तय की थी। We had appointed a secretaries committee which went into the whole question, and a detailed report had been submitted by the secretaries committee to the Minister for Petroleum and Natural Gas, who's with me today. They reviewed the entire criteria. They looked at the various hubs which had been considered. They also looked at the various hubs which had been ignored. And they reworked out the formula, and the cabinet approved the report of the Secretaries Committee. On basis of the formula of the committee, a detailed press statement will be issued to you. The price now fixed is $5.61 per MMBTU. This price will take into consideration the fact that there is a sufficient incentive for drilling and investment, as also it is not excessively burdensome as far as the consumers are concerned. The next major decision was the participation of India in the Chahabar port in Iran. Some of our major ports like JNPT and Kandla will be a part of the joint venture through which this port will be developed. There will be an initial investment also made by us, along with an annual investment made. This port is of extreme strategic importance to us, particularly with regard to our transport link with the region. The next major investment, the next major decision was to approve the development of the Ahmedabad Metro Railway Project Phase 1. अहमदाबाद में जो मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट है उसको भी सरकार ने स्वीकृति दी है। इसकी कीमत 10,773 करोड़ होगी। In phase 1 the distance will be 35.96 kilometers. The initial funding will be both by the central government and private participation, plus institutional finance. There were two more decisions which I'll just flag before you. One with regard to the productivity-linked bonus for railway employees. It is 78 days. And the other important decision was
with regard to the allotment of bungalows for memorials and the management of the samadhis of our departed national leaders. Henceforth, no bungalow shall be made available for memorial for any person. Gandhiji's birth and death anniversary, which is managed by Rajghat, which is managed by the Rajghat committee, will be a function organized by the central government. And for all our other national leaders, it will be private societies or trusts of their supporters, parties, family members, trans parties, which will organize these functions. Well, these were amongst the major decisions. मैं जो पहले 3 निर्णय हैं, हिंदी में भी आपको बतला देता हूं। पहला है कि डीजल का दाम बाजार के दाम के साथ जोड़ दिया गया है, उसको डीरेगुलेट कर दिया गया है। और जैसा आईओसी के चेयरमैन ने बताया कि डीरेगुलेशन का पहला परिणाम है कि आज मध्यरात्रि से डीजल का दाम 3 रुपए 37 पैसे कम हो जाएगा। दूसरा यह है कि एलपीजी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के साथ जोड़ा जाएगा। आरंभ में आधार और जितने बैंक अकाउंट खुल रहे हैं, जिनके पहले भी थे और नए भी खुले हैं, उसमें डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। जो अभी भी बैंकिंग सिस्टम के बाहर हैं, क्योंकि नए अकाउंट इसी दृष्टि से हमने 6 करोड़ 2 लाख खुल चुके हैं, 7 करोड़ हमारा टारगेट था। तो 10 नवंबर से एक मिशन मोड में इसको कार्यान्वित करने का प्रयास होगा। और जो नए होंगे, जिनके पास नहीं होंगे बैंक अकाउंट्स या आधार, उनके लिए अभी भी सिलेंडर वाली पुरानी योजना लागू होगी। तीसरा यह कि जो देश में से डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गैस है, उसकी कीमत को लेकर जो विषय था, जो सरकार को निर्णय करना था, सरकार ने वो निर्णय किया है। और उस निर्णय के तहत अब इसकी कीमत $5.61 पर MMBTU होगी। ये कुछ प्रमुख निर्णय थे। मेरे साथ ऑयल और नेचुरल गैस के मंत्री भी हैं। इसके संबंध में कोई विस्तृत प्रश्न होंगे, क्योंकि आज के निर्णयों के मुख्य नायक वही हैं। तो इसलिए आप मुझसे या उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं क्वेश्चन लेने के पहले 1-2 विषय और जोड़ता हूं जो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है। There are other decisions also. There are other decisions which I've only given you the prominent ones, for which press notes would be put on the net and made available to you by the PIB. ये सारे जो नए डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग नया फॉर्मूला ये 1 नवंबर 2014 से लागू होगी। ऐसे ही जैसे डीजल डी कंट्रोल के बाद एक नया प्राइस रिजिम आईओसी की चेयरमैन ने आप लोगों के सामने देश को बताया, ऐसे ही ये जो नया माननीय वित्त मंत्री जी ने जो नया गैस प्राइसिंग फॉर्मूला बताया, उसमें से जो $5.61 बताया, उसकी सारे कंज्यूमर के ऊपर भी उसकी 4.2 से जब ये बढ़ेगी उसकी इम्पैक्ट आएगी। विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री जी की जो चिंता रहती है देश की आम जन और गरीब लोगों के प्रति, ऐसे ही दिल्ली में
पीएनजी सीएनजी की कस्टमर के ऊपर उसके ऊपर क्या रिजीम आएगी, यहां हमारे आईजीएल के वो बता सकते हैं थोड़ा उसमें। Let the briefing be over, then you ask. Please hold. ठीक, अभी माननीय मंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया है उसके हिसाब से जो गैस की कीमत है वो $4.2 पर MMBTU से जो 5.61 होगी, उसमें करीब करीब $1.41 की बढ़ोतरी हो रही है। उसमें सीएनजी का जो इफेक्ट उसमें पड़ेगा वो करीब ₹4.25 के आसपास पड़ेगा, और जो डोमेस्टिक गैस है पीएनजी उसमें करीब ₹2.5 2.6 का करीब पड़ेगा। इसको हम लोग अपना कोशिश करेंगे, इसको दोबारा हम लोग भी कैलकुलेट करने के बाद में कि मेजॉरिटी में हम इसको ऑब्जर्व करें, और साथ में गवर्नमेंट से हम लोगों की रिक्वेस्ट होगी कि जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस हैं वो अगर रिड्यूस होंगे तो उसमें हेल्प होगी। एक्साइज ड्यूटी जो सीएनजी में उसमें थोड़ा हमको हेल्प मिलेगी। इसकी ये अर्थ है कंज्यूमर के ऊपर इसकी बोझ नहीं आएगी। एक दूसरा और एक दो ऐड करता हूं। अगर कैलकुलेशन करे तो इसे होता, लेकिन उन्होंने कंपनी में अपने इंटरनल असेसमेंट करके नया जो प्राइस फार्मूला निकाला कंज्यूमर के लिए, उसमें देख के They will try and absorb this increase, and they have also requested the state government to moderate the taxes so that the consumer is not affected by it. और जो माननीय वित्त मंत्री जी ने डीबीटीएल के बारे में बताया उसमें और एक जोड़ने लायक विषय वो शुरू होगी तुरंत, जो 10 को कहा गया 54 जिलों में 54 जिलों में इसकी कार्यक्रम 10 तारीख को शुरू हो जाएगी। कौन कौन से वो बताएंगे लिस्ट इस समय, और इसको उसके तुरंत बाद पूरे देश में एक्सपैंड किया जाएगा 54 डीबीटी। What would be the impact on fertilizer and power sector because of the increase in the gas? That's a mode of calculation. But Is this price formula on for the next 5 years as the previous price formula was there? And how often will the review take place? इसकी बारे में रंगराजन जी की जो कमेटी बनी थी और पुराने सरकार ने जो विधा रखी थी अपने गाइडलाइन पे, रंगराजन साहब ने कहा था ये महीने में एक बार होनी चाहिए और पुराने गाइडलाइन में उसको क्वार्टरली कहा गया था। दोनों विषयों को ध्यान में रखते हुए और मार्केट में प्राइस को थोड़ा और मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए नया गाइडलाइन 6 महीने में एक बार इसको रिव्यू करेगी। Sir, will it be applicable for all contractors? Because there was a contentious issue for Reliance Industries D1, D3 fields that they should not be eligible for gas price revision till shortfall is met. Is this a policy for all contractors in that sense? इस सारे को सोचते हुए हमने जो कानूनी प्रक्रिया के अंदर आर्बिट्रेशन में जो विषय लंबित है, केजी फील्ड के D1, D3 कंज्यूमर के उसमें उत्पादित गैस को कंज्यूमर को तो 5.61 में बिक्री होगी, लेकिन जो डिफरेंशियल अमाउंट होगी 4.2 से 5.61 उसको हमने एक गैस पूल अकाउंट में जो गेल मेंटेन करती है उसमें रखा जाएगा। फाइनल जजमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन। Thank you. Thank you. Assessment of